कान में हेडफोन लगा लीजिए और इस वीडियो में जो जो बोला जा रहा है उसको बस ध्यान से सुनिए। अब इसमें मैं बोलूँगी क्या, इसमें मैं आपके एनसीईआरटी क्लास 11th का एनिमल किंगडम चैप्टर को अच्छे से पूरा पढ़ूंगी, ठीक है, और इसको आप रिवाइज करने के काम आएगा। ये वीडियो मेनली उसके लिए है जो नीट 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। नीट 2022 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, बट जो नीट 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये लास्ट डेज रिविजन सीरीज है एनसीईआरटी का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एनिमल किंगडम. The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. Basis of classification. In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of xylem, pattern of digestive, circulatory or reproductive system. These features are used as the basis of animal classification. Okay. Now level of organization. Though all member of Animalia are multicellular, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट 2021 के एग्ज़ाम के लिए। पूरा समझ लीजिए आपका 88 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है और जितने बार एनसीईआरटी को पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा, फ़ायदा है। ओके, दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. फॉर एग्जाम्पल, इन sponges the cells are arranged as loose cell aggregates, that is they exhibit cellular level of organization. Some division of level activities occur among the cells. In salintrate, the arrangement of cells is more complex. Here, the cell performing the same function are arranged into tissues, hence it is called tissue level of organization. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by the member of Platyhelminthes and other higher phyla, which where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. In animal like annelids, arthropod, mollusk, echinodermata and chordata, organ have associated to form functional systems, each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system level of organization. Organ system is different group of animal exhibit various patterns of complexities. For example, the digestive system in Platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serve as both mouth and the anus, and hence it is called incomplete. A complete digestive system has two opening, mouth and anus. Similarly, the circulatory system may be of two type, open type and closed type. Okay, open type in which the blood is pumped. Okay, open type in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it. Closed type in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameters, arteries, veins and capillaries. Symmetry. Animal can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges are mostly asymmetrical, that is any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, okay, then it is called radial symmetry. Salentrates, Ctenophora and Echinodermata have this kind of body plan, that is radial symmetry. Annelids like animals like annelid, arthropod, etc., where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane, that is exhibit bilateral symmetry. Okay, कोई आए हो तो लाइक भी कर दो, ठीक है, कोई भी आए हो तो लाइक कर दो. Now, diploblastic and triploblastic organization. Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, an external ectoderm and an internal endoderm. Okay, they are called diploblastic animals. Example, salentrates. An undifferentiated layer, mesoglia, is present between the ectoderm and endoderm. Okay, now okay, those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animal. And triploblastic animal का example कौन है? Platyhelminthes से लेके पूरा chordate. Okay, now come to the xylem. एक एक टॉपिक हम लोग निकालते जा रहे हैं, ठीक है, होते जा रहा है ऐसे. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन. द बॉडी कैविटी विच इज लाइन्ड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड xylem. Animal possessing xylem are called coelomates. Example, annelid, mollusk and arthropod, echinoderms, hemichordate, chordate. In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom. सर दे दिया सुन कर, तो आपको सुनने कौन बोल रहा है? सजल मंडल, यू कैन लीव द सेशन नाउ.
Such a body cavity is called pseudocoelom, and the animal possessing them are called pseudocoelomates. Example, Ascalmanthus. Okay, the animals in which the body cavity is absent are called acoelomates, and acoelomate का example कौन हो गया? Platyhelminthes. Okay. Now, segmentation. In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organ. For example, in earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation, and the phenomena is known as metamerism. Notochord. Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. Animal with notochords are called chordates. Okay, at least जिसका इंग्लिश अच्छा नहीं है ना वो भी सुन सकते हैं ताकि थोड़ा इंग्लिश भी अच्छा हो जाए तो सर दर्द नहीं होगा. ठीक है. And those animals which do not form this structure are called non-chordates. Example, Porifera to echinoderms. Okay. Now, classification of animals. The broad classification of animals based on common fundamental features इस टेबल में डिस्कस है, तो उस टेबल तो अभी हम लोग नहीं करेंगे. नाउ कम टू द फाइलम. एक एक करके फाइलम करते हैं अब हम लोग. जैसे हम लोग पहले सबसे पहले फाइलम पॉरीफेरा देखते हैं. ओके, मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस. दीज आर जनरली मरीन एंड मोस्टली असिमेट्रिकल. जिस चीज़ का मतलब नहीं आता है तो जैसे ही मैं कंप्लीट करूंगी रीडिंग तो उस टाइम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं. 5 मिनट 10 मिनट मैं बता के ही जाऊंगी. ओके, दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली asymmetrical. These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. Sponges have a water transport or canal system. Water enter through minute pores ostia in the body wall into the central cavity and spongocoel, from where it goes out through the osculum. This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange, and removal of waste. Okay, conocytes or collar cells line the spongocoel and the canals. Digestion is intracellular. Okay, digestion is intracellular. The body is supported by a skeleton made up of spicules or spongin fibers. Okay, sexes are not separate in hermaphrodite, और hermaphrodite होता है आपका porifera. Eggs and sperms are produced by the same individual, that is called hermaphrodite animal. Okay, sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Fertilization is internal and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from the adult. Okay, adult क्या होता है पता है ना? 18+. Okay, चलिए. एग्जाम्पल, साइकॉन यानी स्काइफा, स्पॉन्जिला यानी फ्रेश वाटर स्पंज, यो स्पॉन्जिया यानी बाथ स्पंज. ओके, नाउ एक फाइलम खत्म हो गया हम लोगों का, फाइलम पॉरीफेरा खत्म हो गया. नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं, डेट इज फाइलम सेलेंट्रेटा. ठीक है, और जो भी बच्चे स्ट्रिक्टली नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो साथ में एनसीईआरटी बुक भी खोल सकते हैं, तो उससे और ज़्यादा अच्छा याद होगा कि एनसीईआरटी बुक को खोल लीजिए. ठीक है, और जो मैं बोल रही हूँ उसको हेडफोन लगा के सुनिए और हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए और जहाँ जहाँ मैं बोले जा रही हूँ बस आप वहाँ अपना हाथ चलाते रहिए. तो इससे क्या होगा कि आपके बहुत ज़्यादा सेंस ऑर्गन काम करेंगे. एक तो आपका हाथ भी काम कर रहा है, आपका आइज़ भी काम कर रहा है, आपका कान भी काम कर रहा है. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रह पाएगा चीज़ें. फेस नहीं दिख रहा, फेस नहीं दिखाना है बच्चे. अभी क्या है, समझाने का क्लास नहीं चल रहा है, ये रिवीजन सीरीज़ चल रहा है. ठीक है, जो बच्चे स्ट्रिक्टली नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के काम के हैं. ठीक है, ओके. नाउ फाइलम सेलेंट्रेटा अब हम लोग पढ़ते हैं. फाइलम सेलेंट्रेटा जो है नाइडेरिया, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग है. रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं. द नेम्स नाइडेरिया इज डिराइव फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट. ओके, और जिस बच्चे को अपना रीडिंग अच्छा करना है या फेस नहीं दिखेगा क्या, नहीं ऐसा कोई अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है. ठीक है, चलो क्या मैसेज आता है, चलो ध्यान दो पढ़ने में. नाइडोब्लास्ट विच कंटेन द स्टिंगिंग capsules or nematocysts present on the tentacles and the bodies. Nidoblasts are used for anchorage, defense and for the capture of prey. Cnidarian exhibit tissue level organization and are diploblastic. They have a central gastrovascular cavity with a single opening mouth on hypostome. Digestion is extracellular and intracellular. Okay, some of the Cnidarian example corals have a skeleton composed of calcium carbonate. मैं ट्यूशन कहाँ पढ़ाती हूँ, ये कोचिंग में पढ़ाई होती है हम लोगों की. ठीक है, ओके.
Cnidarian exhibit two basic body forms called polyp and medusa. The former is a sessile and cylindrical form like Hydra, Adamsia, etc., whereas the latter is umbrella shape and the free swimming like Aurelia or jellyfish. Those cnidarians which exist in both form exhibit alteration of generation, that is metagenesis, that is polyp produce medusae asexually and medusae form the polyp sexually. Example obelia. Okay, ट्यूशन और कोचिंग के बारे में कुछ भी डिस्कस करना हो तो संजय सर से बात कर सकते हो. ओके ओके. नाउ एग्जांपल फाइसेलिया, दैट इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया सी एनिमोन, पेनाटुला sea pen, gorgonia sea fan and mandrina that is brain coral. ओके, ब्रेन कोरल. नाउ हम लोग का सेलेंट्रेटा भी ख़त्म हो चुका है. सो अब हम लोग मूव करते हैं फाइलम टेनोफोरा में. टेनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके. The body bears 8 external rows of ciliated complates which help in locomotion. Digestion is both extracellular and intracellular. Bioluminescence, the property of a living organism to emit light, is well marked in ctenophores. Okay, sexes are not separate. Reproduction takes place only by sexual means. Fertilization is external with indirect development. Example pleurobrachia and a tenoplana. Okay, so टेनोफोरा भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया. नाउ कम टू द फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस. ओके, दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस आर कॉल्ड flatworms. They are mostly endoparasites found in animal including human being. Flatworms are bilaterally symmetrical. Triploblastic, acoelomate animals with organ level of organization. Hooks and circles are present in the parasitic forms. Some of them absorb nutrient from the host directly through their body surface. Specialized cells called flame cells help in osmoregulation and excretion. Sexes are not separate in Platyhelminthes. Fertilization is internal and development is through many larval stages. Some member like Planaria possess high regeneration capacity. Example Taenia, tapeworm, fasciola, liver, fluke. Okay. Okay, now come to the phylum Ascalmenthes. Okay, the body of the Ascalmenthes is circular in cross section, hence the name roundworm. They may be free living, aquatic and terrestrial or parasitic in plants and animal. Roundworm have organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and pseudocoelomate animal. Alimentary canal is complete with a well developed muscular pharynx. An excretory tube remove body wastes from the body cavity through the excretory pore. Sexes are separate, dioecious, male and female are distinct. Often female are longer than males. Fertilization is internal and development may be direct. The young one resemble the adult or indirect. ओके, एग्जाम्पल है एस्केरिस यानी राउंड वॉर्म, व्यूचेरिया यानी फिलेरियल वॉर्म एंड साइक्लोस्टोमा यानी हुक वॉर्म. ये सब बहुत सारा डिजीज कॉज करते हैं. ओके, so come to the next phylum Annelida. Okay, they may be aquatic, marine on fresh water or terrestrial, free living, sometimes parasitic. They exhibit organ system level of body organization, bilateral symmetry. They are triploblastic, metamerically segmented and coelomate animal. Their body surface is distinctly marked into the segments or metameres. And the phylum name Annelida, Latin में इसका मतलब होता है annulus. Annulus का मतलब होता है little ring. Okay, they possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion. Aquatic annelids like Nereis. Nereis possess lateral appendages, parapodia which help in swimming. A closed circulatory system is present. Nephridia help in osmoregulation and excretion in Annelida. Neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. Nereis is an aquatic form. It is dioecious and it was a previous year medical question. But earthworm and leeches are monoecious. Reproduction is sexual. Example Nereis, Ferritima, earthworm, and Hirudinaria, that is blood sucking leech. And come to the next phylum, that is Phylum Arthropoda. This is the largest phylum of Animalia which include insects. Over 2/3 of the all named species of earth are arthropoda. Okay, they have organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, segmented and coelomate animal.
The body of arthropod is covered by chitinous exoskeleton. Okay, the body consists of head, thorax, and abdomen. They have jointed appendages. Arthos means joint, poda means appendages. Respiratory organs are gills, book lungs और tracheal system. Circulatory system arthropoda में open type होता है. Sensory organ like antenna, eye, compound eye, and simple statocyst or balance organ are present in arthropoda. Excretion by Malpighian tubules. They are mostly dioecious. Dioecious अलग अलग बॉडी पे होता है. फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है. दे आर मोस्टली ओविपेरस होते हैं. डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इसका एग्जांपल है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट एपिस यानी हनी बी, बॉम्बिक्स यानी सिल्क वॉर्म, लैसिफर यानी लैक इंसेक्ट, विक्टर एनोफिलस होता है, क्यूलेक्स एडेज मॉस्किटो, ग्रिगेरियस पेस्ट यानी लोकस्ट और लिविंग फॉसिल यानी ल्यूमिलस यानी किंग क्रैब. ओके, तो एनिमल किंगडम का इतना पार्ट इस सेशन में रहेगा और नेक्स्ट मैं बनाऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इससे आगे का पार्ट यानी फाइलम मोलस्का से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू एवरीवन.